सबसे कॉमन क्रिटिक मैंने पढ़ा है पिछले 10 सालों में एजुकेशन सिस्टम के बारे में कंटेम्प्रेरी, दैट इज इट डज नॉट गिव यू एनी सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। बस आप मैथ के वो थ्योरम सॉल्व करे जाओ करे जाओ करे जाओ। अबे भाई क्यों करो यार, व्हाट द हेल इज दी। बीबीए एटलीस्ट देयर इज सम सेंस ना कि चलो ठीक है मार्केटिंग हम सीखेंगे तो ये सीखेंगे तो इवेंचुअली दैट इज गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस। बट आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो, हाँ, वाई आई मीन इट्स पाकिस्तानी प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अभी मैं एक किताब में उसको पढ़ रहा हूँ, डेविड डब्ल्यू और उसने इस एंगल से लिखी है कि हाउ डू वी री इन्वेंट द एजुकेशन सिस्टम सो दैट हम ऐसे लोग प्रोड्यूस करें हु आर कॉन्शियस अबाउट दी नेचुरल एनवायरनमेंट। जो क्लाइमेट क्राइसिस जो क्रिएट हो रहा है मतलब इट इज़ बिकॉज कि जो लोग मार्केट में इस वक्त बैठे हुए हैं दे आर नॉट अवेयर कि उनके एक्शंस किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं। एंड ही इज गिविंग एन ऑल्टरनेटिव इन दैट बुक, अर्थ एंड माइंड। द टाइटल इज अर्थ एंड माइंड ऑन एजुकेशन, environment and human prospect. This is the title of the book. If you're following me, somebody is following me on Facebook, तो मैं कुछ चीज़ें उसमें निकाल के उस पर डालता रहता हूँ। तो the book is also talking about the same thing. एक बहुत interesting, there is so much, I can give you so many authors जिन्होंने criticize किया education system को। रिकार्डो सेमलर की मैंने example दी थी आपको last time, उसने भी alternative education system establish किया ब्राज़ील के अंदर। the रिकार्डो सेमलर जो सैमको का जो CEO है, last time मैंने refer किया था रिकार्डो सेमलर को, ठीक है। तो he also created a school, an alternative type of a school in Brazil, which is very different। मैं उसकी TED Talk share करूँगा, आप देखिएगा। Is also making the same point. The education does not tell you। एलॉन मस्क ने अभी एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसने अपने बच्चों के लिए अलग से इस्टेब्लिश किया है जिस विच एक्चुअली यूज़ है टॉप टू बॉटम अप्रोच। मीन्स कि ही गिव्स द बिगर पिक्चर फर्स्ट कि भाई ये दुनिया में ये हो रहा है एंड दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट गोज एंड फिट इनटू दिस पर्टिकुलर बिगर पिक्चर। तो दैट इज हाउ यू आर एबल टू मेक अ मीनिंगफुल कनेक्शन कि यार जो मैं सीख रहा हूँ उसकी सिग्निफिकेंस क्या है इन दैट सेंस। All right? So education system does not give you any sense of purpose. What happens then? But this is one of the very primal needs. इंसान की जो बुनियादी जो ज़रूरियात है ना, नीड जो प्राइमरी नीड्स हैं, one of them is to have a sense of purpose. I'm just giving one example of how the education system actually does literally starve you from fulfilling certain basic needs. और इतनी ज़्यादा starvation से आप गुजरते हैं, you even forget कि वो नीड भी आप में एग्जिस्ट करती है। You literally transform yourself into a zombie, unfortunately. There are very few individuals which I've seen जो अपनी इस ऑथेंटिसिटी को या उन नीड्स को किसी तरह अलाइव रखते हैं एंड दे कीप ऑन बेयरिंग द पेन एंड इवेंचुअली व्हेन दे ग्रो अप दे डू समथिंग, स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट। एंड दैट इज व्हाई आई हैव वेरी डीप रिस्पेक्ट फॉर ऑल द बैक बेंचर्स। बैक बेंचर्स व्हाई? बिकॉज दे आर दोज पीपल हु जिनको सिस्टम जो है ना वो करप्ट करने की कोशिश कर रहा है बट दे आर रेजिस्टिंग। या दैट इज एग्जैक्टली द रीजन ना, वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाई डू आई वांट टू होम स्कूल माई किड्स। मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ माई किड्स ऑल्सो बिकॉज दे आर रेजिस्टिंग टू देयर मैक्सिमम एफर्ट कि किसी तरह हम उस स्कूल की जो ब्रेन वॉशिंग है हम किसको रेजिस्ट करते हैं। दे आर परफॉर्मिंग एट देयर वर्स्ट इन देयर स्कूल एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट बिकॉज अदरवाइज इफ उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं इफ़ यू सी तो माई सन इज़ वेरी क्रिएटिव। वो गत्ते कोई भी कार्टन उसके हाथ लग जाए ना तो वो यूट्यूब से वीडियोस देख के ही स्टार्ट मेकिंग स्टफ। तो माई डॉटर और वो हमने उनको मुख्तलिफ किस्म के एडेसिव ला के दिए हुए, एक ग्लूगन ला के दी हुई है और वो बनाते रहते हैं चीज़ें काट के। एंड दिस सच सो मच डिटेल इन वॉट एवर ही क्रिएट्स। वो अलग बात, थोड़ी परफेक्शन का मसला है, बट डिटेल की अगर आप बात करें ना एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड ही स्टार्ट सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट किड्स। एक उसने कोई नाइफ बनाया उसी मटेरियल का, जो आइसक्रीम स्टिक्स आती है ना वो किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे यू गेट दी, उसको उसने काट पीट के उसने ही मेड अ नाइफ एंड सोल्ड इट फॉर 50 रुपीज़ टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। मैंने कहा तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, विदाउट एनी सरकाज़म।
by the way. Two. Yeah. या अगर आप उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक करें तो वो तो मतलब इस डॉटर को तो नोटिस दे दिया स्कूल वालों ने कि भाई अगर इसका इसका अच्छे नंबर नहीं आए, इसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो उसका एडमिशन इज कैंसिल्ड. मैंने कहा दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. अमेरिकन इज अनफॉर्चुनेटली दुनिया के जो वर्स्ट सिस्टम्स हैं ना उसमें से इट इज, या इट इज फॉलोइंग इन दैट. What kind of purpose you're talking about? Was it a state school or was it a private school? It was a private school. हाँ तो वो तो दिस अ डिफरेंट स्टोरी है ना. प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं. बट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस? क्या आंसर देंगे आफ्टर लर्निंग फ्रॉम द स्कूल? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस? व्हाई डू यू एग्जिस्ट? क्या बताया उन्होंने आपको? नहीं नहीं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस? आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्पस, व्हाई यू आर अलाइव. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टफ. Yeah. What you are mentioning is a kind of a goal which is a bit more socially responsible, but I'm talking about the purpose of existence. Why do you exist in the first place? That's a different thing. That's something much more abstract beyond primal, basic, foundation level stuff. Anyways. Yeah. Right. Right. अच्छा, एजुकेशन में चले एक तो पर्पस वाली बात हो गई. डज द एजुकेशन सिस्टम टीचेस यू हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रीड एंड आइडेंटिफाई योर इमोशंस? हाँ, देर इज जीरो अंडरस्टैंडिंग एंड इवेंचुअली फिर आप जो है ना उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है फोकस करते रहते हैं. द टाइम एक्चुअली पासेस. मतलब आई हैव डन PhD एंड टिल PhD देयर वाज एब्सोल्युटली zero discussion on what's happening inside of me. Huh? But what is the whole point? I mean, you learn about the stuff which is happening in different industry and different areas, but you are absolutely oblivious about your own self. है? और ये जो disconnect है between us and our own being increases eventually. जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं अपनी एजुकेशन के अंदर, the distance between you and yourself becomes more and more and more and more and more. All right? Was there any course, yeah, anything about how do you listen to your intuition, your instincts?
ओके. हाँ. हाँ. माय गॉड. यस. ठीक है, तो यू हार्डली गेट टू नो अबाउट योर ओन सेल्फ. ठीक है, एंड द डिस्कनेक्ट बिकम्स मोर एंड मोर. राइट. एंड टिपिकली जो लोग मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार होते हैं ना, तो उनमें इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि you have achieved certain things in life and you have realized that there are so many things which you cannot achieve, या वो they're too idealistic for example, या एटलीस्ट उनको अचीव करते करते मजीद 20 साल लग जाएंगे, एंड यू लाइक कि यार अब मैं क्या करूँ. और उस वक्त जो एक और रियलाइजेशन होती है ना, यू लाइक यार हु द हेल एम आई, मतलब मैं खुद कौन हूँ भाई. हैं, मतलब यू आर लिविंग विद लिटरली विद अ गोस्ट. हैं, आप चल रहे फिर रहे हैं उसके साथ, एंड दिस इज ट्रू. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग दैट यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ, इंक्लूडिंग सो मेनी इमोशंस जो आप कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते. दे आर हैपनिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड, एंड व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू. दैट इज व्हाई मैंने आपसे पूछा था कि वुड यू लाइक टू स्पेंड अ वीक अलोन. ठीक है, एंड एवरीबॉडी सेड कि वी आर गोइंग टू किल आवरसेल्फ, पता नहीं क्या क्या. ठीक है, तो इट इज बिकॉज के when you don't understand something it haunts you. ठीक है, तो इस डिस्कनेक्ट की वजह से जो eventually जो पेन emerge होती है, फिर उसका भी एडवांटेज लेता है सिस्टम, because we have to eventually keep on distracting ourselves. This is something which I'm repeating. I think I've already talked about this. So the education system is primarily designed to create workers for the corporate system. It is not designed to enlighten you. It is not designed to make you a good citizen. It is not designed to make you more self-aware. There is a whole big list of stuff that people should know, but they have absolutely no idea. जो लोग बोलते हैं ना, ये भी सिखाना चाहिए स्कूल में, वो भी सिखाना चाहिए. मैंने समझ तो लो एजुकेशन सिस्टम का मकसद है क्या. मकसद ये थोड़ी कि आप कुछ समझ लें, कुछ सीख लें. The purpose is that you force fit yourself, your personality into that mold, जिसके अंदर फिट होने के बाद you will become a good वर्कर इन दी कॉर्पोरेट सेक्टर. वाइट कॉलर वर्कर और ब्लू कॉलर वर्कर. ठीक है, तो आप लोग कौन से वर्कर बनेंगे आके? ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर? वाइट कॉलर ना, ब्लू कॉलर तो बेचारे वो मजदूर होते हैं. ठीक है, तो यू आर गोइंग टू, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे लग रहे हैं वहाँ पे जाके, लेट्स सपोज, तो यू आर ए वाइट कॉलर वर्कर. ठीक है, 6 महीने तक आपसे फोटोकॉपी करवाते रहेंगे, जाओ बेटा फोटोकॉपी करा के लाओ. हाँ, exactly. You will have a better title. You will not be called a PN, but you will have a better title for like 6-7 months. Yeah. So that is why I emphasize students that bhai, please change your vision a little bit and start thinking of creating something on your own. Start a business. अगर let's suppose आपका फैमिली बिजनेस कोई है, या फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड, तो डोंट ट्राई टू नॉट टू यूटिलाइज दैट capacity or resource or platform that you have in form of a family business in your home. Use it, and ठीक है, fine, शौकिया में you might want to work for the corporate sector for a couple of years, but eventually please come back and start your own business. If you want to live a life, corporate sector is not the place to do that.